आज हम बात करेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। ये 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल का पहला चैप्टर है। इसमें 3 स्टेजेस आते हैं या 3 फेजेस, जिनमें राइटर अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो उसकी रिलेशन है उसके मुताबिक बात करते हैं। तो पहले स्टेज में वो कहते हैं उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। वो एक ओल्ड वुमेन है, उसका फेस रिंकल्ड है, वो थोड़ी झुकी हुई है, शॉर्ट है और मोटी मोटी औरत है। तो लेकिन वो रिलीजियस टाइप की वुमेन है, यानी वो हमेशा उसकी रोजरी जो है, जिसको तस्बीह कहते हैं, उसके ऊपर जो दाने होते हैं वो अक्सर वो पढ़ती रहती है, पूजा करती रहती है। और उसका बॉन्ड जो है ग्रैंड मदर का खुशवंत सिंह के साथ, उनकी रिलेशन जो है वो बहुत मजबूत है। तो जब खुशवंत सिंह छोटे बच्चे थे तो वो सुबह सवेरे उसको जगाया करती थी, तो फिर उसको वॉशरूम में ले जाती थी, हैविंग हिम अ बाथ। तो उस वहां वो कुछ प्रेयर्स गाती थी ताकि खुशवंत सिंह दिल से मन से उनको याद करे। लेकिन खुशवंत सिंह को उसकी परवाह नहीं थी, अलबत्ता उसको इस ग्रैंड मदर की आवाज बहुत पसंद थी। फिर वो ग्रैंड मदर जो थी वो उसको एकम्पनी करती थी, बराबर साथ जाती थी स्कूल तक। स्कूल के साथ एक टेंपल था, तो वो खुद टेंपल में बैठती थी, वहां पूजा करती थी। तो तब तक ये खुशवंत सिंह जो थी वो स्कूल में रहते थे। जब दोनों अपना काम खत्म करते थे तो बाहर निकलते थे, तो टेंपल के दरवाजे के बाहर कुछ डॉग्स होते थे, वो उनको उनके पीछे पीछे आते थे बराबर घर तक। और जो ये ग्रैंड मदर थी वो उनको रोटियां चपाती खिलाती थी। तो ये हुआ पहला स्टेज। दूसरी स्टेज में ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह को सिटी बुलाया जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो खुशवंत सिंह के हैं वो वहां सेटल हुए होते हैं। तो जब वो सेटल हो जाते हैं वहां, तो इन दोनों को वहां बुलाते हैं। तो वहां खुशवंत सिंह जो है वो स्कूल जाता है एक मोटर वैन में। तो जब वो मोटर वैन में जाता है तो कुदरती बात है कि ग्रैंड मदर उसके साथ स्कूल नहीं जाती है। तो जब वो स्कूल से वापस आ जाते हैं खुशवंत सिंह, तो वो उसको पूछती है कि क्या पढ़ाया है आज वहां आपको टीचरों ने। तो वो कहते हैं कि कुछ साइंस के मुताबिक पढ़ाया, कुछ इंग्लिश के मुताबिक पढ़ाया और कुछ सम लेसन्स अबाउट म्यूजिक भी दिए गए। लेकिन ग्रैंड मदर को ये म्यूजिक जो है ना, ये लेसन ये उसको पसंद नहीं थे। वो चाहती थी कि स्क्रिप्चर्स के मुताबिक उसको कुछ पढ़ाया जाए। तो बहरहाल इसकी वजह से अब वो उसकी जो तालीम है या किताबें हैं उसमें वो अब उसकी मदद नहीं कर सकती थी। तो लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन में गैप आ गई। हालांकि प्यार मोहब्बत अभी बराबर थी। तो अब वो कम मिलते थे, हालांकि दे शेयर द सेम रूम, और वो कोई अब उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी। तो अब इसका मशगला यहाँ सिटी हाउस में क्या था, वो स्पैरोस को फीड करती थी, वो उन्हीं को चपाती खिलाती थी, उसका भूसा या उसका क्रम्ब्स या चूरा उनको खिलाती थी। तो अब थर्ड स्टेज आता है कि खुशवंत सिंह जो है वो बाहर जाते हैं अब्रॉड हायर स्टडीज अचीव करने के लिए। तो क्योंकि उन्हें काफी देर तक वहां ठहरना होता है तो वो बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं कि शायद उस वक्त तक ये ग्रैंड मदर जो है शायद जिंदा नहीं होगी। लेकिन आफ्टर 5 इयर्स जब वो वापस आ जाते हैं तो कोई फिजिकल चेंज उसकी ग्रैंड मदर के जिस्म में नहीं आई होती है। अलबत्ता उस शाम एक अजीब कैफियत हालत तारी हो जाती है ग्रैंड मदर के जिस्म के ऊपर। वो हमसाया औरतों को बुलाती है, ड्रम पे वो कुछ गाती है अबाउट होम कमिंग वॉरियर्स। तो फिर अगली सुबह वो बीमार पड़ जाती है और उस बीमारी की वजह से उसकी मौत वाक़ा हो जाती है। तो जब उसकी मौत वाक़ा हो जाती है तो उसके बाद उसकी क्रिमेशन जो है वो बड़ी मजहबी एहतराम और अकीदत के साथ अदा की जाती है। तो उसके बाद एक अजीब वाक़ा होता है कि जब वो घर वापस आ जाते हैं सभी, तो वहां वो देखते हैं कि वो स्पैरोज जिनको वो खिलाती थी, वो चपाती उसके क्रम्ब्स, तो वो सभी जमा हुई होती है वहां आंगन में, रूम में, वरांडा पे, हर जगह वो जमा हुई होती है। तो इस फैमिली की जो बहू होती है वो उनको क्रम्ब्स डालती है, लेकिन वो परिंदे जो होते हैं बर्ड स्पैरोस, वो कोई नोटिस उसका नहीं लेते हैं, अलबत्ता वो उड़ जाते हैं आसमान की तरफ। तो नेक्स्ट डे स्वीपर आ जाता है, वो इन क्रम्ब्स को उठाता है और डस्टबिन में फेंक देता है। विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन। थैंक्स।
अब मैं बात करता हूं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह in English. Let me talk about it. In this lesson, Khushwant Singh gives a detailed account of grandmother, his relation with him in three phases or in three stages. In the first phase, he talks about the health condition of his grandmother. She was old, having wrinkled face. She was slightly bent. She was short and fat woman, and but she was very much religious type of woman. The bond and the relation between two was very much strong. During the schooling days, early schooling days, she would wake Khushwant Singh very early in the morning, bathed him, and she sang prayers there so that Khushwant Singh may remember those prayers by heart. But he did not bother about those prayers, but loved the voice of the grandmother very much. Then the grandmother would accompany him to the school. There was a temple associated with that very nearby, associated with that very school. She used to spend her time there reading scriptures while as Khushwant Singh remained in the school. After finishing their work, they would both return to their home. At the door of the temple, they were followed by dogs each day, and the grandmother used to feed them with chapatis. This is the first phase or stage. In the second stage, they both Khushwant Singh and the grandmother moved to city because the parents of the Khushwant Singh have already got settled there. There in the school, Khushwant Singh goes in a motor vehicle or motor van. So the grandmother is not in a position to accompany him to the school. After coming from the school, she asks him what was taught there by your teachers. He answers, we were given some lessons about science, English, and about music. Grandmother does not like the lessons on music, and she says it is the work of beggars and harlots. This develops a sort of gap in their relation, though it is still based on affinity and love and affection. But they now meet less, though they share the same room. But the grandmother is not able to help him in his studies. Here in the tea house, her hobby becomes feeding of sparrows with the crumbs of chapatis. This is the second stage. In the third and final stage, Khushwant Singh moves to goes abroad in order to study higher education. But he's very much worried about the health condition of his grandmother. He thinks that after a long gap, perhaps she would not be alive. But after returning from for about 5 years, he finds the grandmother in the same physical appearance. No any major change has taken place with regard to her physical appearance. In the evening, a strange change occurs on the body of the grandmother. She calls the women of the neighbors and sings on the drum of homecoming warriors. Then the next morning she gets ill, and in this way she passes away. The cremation is done with great religious fervor and enthusiasm. After that, when they return home, there a strange thing happens. The sparrows, which she used to feed daily, they have gathered in the courtyard, on the veranda, in the room. And the daughter-in-law of the house had thrown crumbs to them, but the birds did not take notice of those crumbs. On the other hand, they flew in the sky. Next day, the sweeper came and collected the crumbs and threw them into the dustbin. This is the main crux of the lesson, the portrait of the lady by Khushwant Singh. Thanks.